So, good morning, students. Let's start our next topic, electronegativity, which is represented by symbol En, or sometimes we write X, which is pronounced as chi. So, electronegativity आज हमारा टॉपिक है पढ़ने का। बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन पढ़ने से पहले लेट्स ट्राई टू हैव थ्री केसेस। चलो हम तीन केस के बारे में बात करते हैं, जहां पर हमने दो एटम लेके रखा है। एक एलिमेंट ए का और एक एलिमेंट बी का। दीज आर टू एटम ऑफ व्हाट एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। मान लो कि इन लोग क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। सपोज ए एंड बी शेयर टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन देम। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे यहां पर क्या हो रहा है? तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, है ना। नाउ यू सी हियर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट विच बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड. So therefore we can say covalent bond is formed. Covalent bond is present between A and B. ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है हमारे पास। क्या what we have two atoms of two element A and B. They have shared two electron between them. Two electrons are shared between them, and sharing of electron, है ना, forms covalent bond between A and B. Now dear student, we have three cases. So let's talk about the first case. Suppose this shared electron, suppose we see this shared electron between A and B, it is attracted by B. मान लो ये B जो है, it attracts the shared electron towards itself, है ना। B has attracted shared electron. अभी बीचों बीच इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या होगा, B ने अपनी तरफ खींच लिया। So we can say, हम बोल सकते हैं क्या कि B has more tendency TENDNCY, more tendency to attract what? Attract shared pair electron. It has more tendency to attract shared pair electron. B has more tendency to attract shared pair electron. Or we can have one more case, student, कि suppose the shared electron between A and B. Suppose shared electron between A and B has been attracted by A. पहले बीच में था, अब A ने क्या किया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सपोज सेकेंड केस, तो इन दिस केस व्हाट वी कैन से, A has more tendency to attract what? Shared pair electron. ओके बच्चों। और है द थर्ड केस क्या होगा बच्चों कि सपोज A and B, they have electron shared between them, and if the electron is neither dragging towards A, ना तो वो A की तरफ खींच रहा है ना तो वो B की तरफ खींच रहा है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे क्या बच्चों कि both A and B have what? equal tendency to attract what? Attract shared pair electron. So what you see here, जब बच्चों एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है
ए और बी के बीच में, एटम ऑफ टू एलिमेंट के बीच में। और मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड है ना। अगर बी उसको खींच लेगा अपनी तरफ तो बोलेंगे बी हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। बी हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मान लो अगर ए अपनी तरफ खींच लेता है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो बोलेंगे ए हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इफ नाइदर ए और बी आर एबल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मान लो ए और बी दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींच पाते, इसका मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी क्या है, बराबर है। तो हम बोलते हैं बोथ ए एंड बी हैव इक्वल टेंडेंसी to attract shared paired electron. This tendency to attract electron, इसको बच्चों हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो so let's see the definition. Electronegativity of an element is the tendency of its atom. It is the tendency of its atom for what? For attracting to attract what? Shared pair electron, to attract shared pair electron towards itself। कहां पर? इन कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना। अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब किस तरफ खींच रहा है, अगर बी खींच रहा है तो बोलेंगे बी क्या है, इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ए के पास मोर कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन खींचने की तो बोलेंगे ए हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस केस में बोलेंगे क्या कि बी इज, इस केस में क्या बोलेंगे, बी इज व्हाट, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और इस केस में क्या बोलेंगे बच्चों, इस केस में बोलेंगे क्या, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इस केस में क्या बोलेंगे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीचों बीच है, दोनों की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो बोलेंगे क्या, ए एंड बी हैव व्हाट, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बाउंडेड एटम, एक बंधे हुए एटम की टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जिसकी तरफ खींचेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी तरफ खींचेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसकी तरफ नहीं खींचेगा वो क्या बन जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बच्चों हम बात करेंगे क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है। देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। बट for electronegativity there is no unit to measure, what, no unit of electronegativity. It is what, it is a relative value of bonded atom, it is a relative value of bonded atom, it has relatively more tendency, so it is a relative value, there is no unit of electronegativity. सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझाया किसने, Linnaeus Pauling explained it for first time, and then Pauling gave a relative values of electronegativities of different element by creating what, Pauling scale. अब उसी के बारे में बच्चों हम बात करेंगे कि what is Pauling scale and what are the different electronegativities, relative values of electronegativity of different elements. Today students, here is a small table of what, elements with their what, electronegative, relative value of electronegativity designed by Pauling scale. तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि हम जब किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं बच्चों, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। 0.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस across period, the electronegativity is increasing.
एंड व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, है ना, तो हम क्या देख रहे हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू सी हियर 1, 2.1, 1, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, 0.7. The electronegativity is decreasing from top to bottom in a group, top to bottom in a group. तो एक रफ अपन को एक आइडिया मिल गया अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड फ्रॉम दिस व्हाट यू सी हियर, ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड फ्लोरीन इज द highest value of electronegativity, and cesium or francium they have the lowest value of electronegativity. So here we have the lowest value, we have the lowest electronegativity of cesium and fluorine, and cesium and francium, sorry, and fluorine has the highest, it has the highest electronegativity. So we can say fluorine has the highest tendency to attract electron, and cesium or francium has the least tendency to attract shared pair electron. अब बच्चों यहाँ पर कुछ और खास बात देखो कि सेकेंड पीरियड के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो अपन आराम से याद कर सकते हैं. फ्लोरीन फिर 0.5 कम करते जाओ तो 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1. तो ये अपन को ऑलरेडी अपन को ये आराम से याद हो गई. नाउ यहाँ से यू कैन सी हियर हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस they have equal electronegativity. Hydrogen and phosphorus they have equal electronegativity. How much? 2.1 and 2.1, है ना. तो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको बनने लगी. नाउ कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, कार्बन, sulfur and iodine they have equal tendency to attract electron. Carbon, sulfur and iodine they have equal tendency to attract electron. How much? 2.5. In the same way you can see here nitrogen and chlorine they have what? Equal tendency to attract electron. So nitrogen has tendency to attract electron equal to what? Chlorine, 3.0. In the same way here you can, if you want to learn, we can learn what? The electronegativity value of beryllium and aluminum is almost same. So these are some of the value we can what? Just learn. Yeah, fluorine has the highest electronegativity value, then oxygen, then we have chlorine and nitrogen have the similar electronegativity value, 3.0. Carbon, sulfur and iodine they have similar electronegativity, 2.5. Hydrogen and phosphorus they have equal electronegativity, and beryllium and aluminum also have what? Equal electronegativity, equal tendency to attract electron. Same case here, cesium and francium they have equal electronegativity of how much? 0.7. So these are the some rough idea designed of values of electronegativity designed by Pauling scale. How it is measured we will discuss in the later this lecture. So this you have understood. So now let's move on. What are the factors that influence the value of electronegativity? तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? पाउलिंग स्केल थोड़ा सा पढ़ा, पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो हमने क्या देखा बच्चों कि अक्रॉस द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज हो रही है एज पर पाउलिंग स्केल, और when we move from top to bottom the electronegativity is decreasing. Okay, now let's see how this electronegativity is increasing and electronegativity is decreasing. So let's see the first factor that affect the electronegativity. तो first factor बच्चों क्या है हमारे पास? Atomic size and shielding effect, है ना. So let's see how atomic size and shielding effect is related to the electronegativity. On moving down the group बच्चों क्या हो रहा है? When we move down the group, what happens? Down the group, the atomic size, हमको पता ही है atomic size क्या होता है? Atomic size increases and shielding effect increases. Due to increase in number of cell, shielding effect increases, size increases. जब size बढ़ रहा है, जब shielding effect बढ़ रहा है, तो electronegativity decrease हो रही है ना. That means what? They are inversely proportional to each other. तो इसका हम बोल सकते हैं बच्चों क्या?
electronegativity is inversely proportional to size and inversely proportional to shielding effect, है ना? That means if size is larger, atomic size will electronegativity will be less. If the size is smaller, the electronegativity will be more. Now you can see this trend here. When we move from left to right in period, the electronegativity is increasing. Now let's see how electronegativity is related to effective nuclear charge. तो बच्चों हम जानते हैं क्या कि ZEFF effective nuclear charge increases along the period, and when the ZEFF increases, हम क्या देख रहे हैं, electronegativity is also increasing. इसका मतलब कि electronegativity is directly proportional to effective nuclear charge, directly proportional to each other. Now let's see the third factor which influence the electronegativity, that is what? Oxidation state. The third factor that influence the electronegativity is what, dear student? Oxidation state. So let's see what is electronegativity. Is a tendency to attract shared pair electron. So suppose हम बात करेंगे बच्चों क्या कि हमारे पास है Mn, ठीक है, Mn+2, हमारे पास है Mn प्लस सपोज 4, Mn+7. सो हम देखेंगे वेयर देयर इज मैक्सिमम deficiency of electron is in Mn+7. So it will have maximum tendency to attract what shared pair electron. So we can say कि electronegativity is directly proportional to oxidation state. So what we can say here, Mn7+ will have more electronegativity as compared to Mn+4 as compared to Mn2+. Same thing we can have for what? Suppose we are having oxygen atom, oxygen cation and oxygen anion. So where we have maximum deficiency? In oxygen cation. So oxygen cation will have maximum electronegativity and oxygen anion will have the minimum what? Electronegativity. In the same way, suppose we have Fe, we have Fe2+, we have Fe3+. Where there is maximum deficiency of electron, Fe3+, so it will have maximum tendency to attract shared paired electron. So we can say here क्या कि electronegativity is directly proportional to the oxidation state. In the same way, student, the electronegativity value also depends upon what? The nature of substituent attached to an atom. इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं. सपोज बच्चों अगर हम बात करते हैं कि सपोज वी आर हैविंग CH3I, है ना, क्या बोलेंगे इसको बोलो, आइडोमीथेन, एंड वी हैव व्हाट? CF3I, है ना. These are the two compounds. Here you see here carbon is attached to hydrogen and iodine. Here we have carbon attached to iodine and fluorine. अब बच्चों हमको पता है क्या कि the electronegativity of fluorine is how much? 4.0, and electronegativity of carbon is how much? 2.5. अभी पढ़ा हम लोगों ने. तो what you see here कि fluorine will attract the electron pair towards itself. Fluorine will attract electron pair itself. तो यहाँ पे कार्बन पे क्या क्रिएट होगा बच्चों? कार्बन पे क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज. When there is more positive charge, this carbon will be what? More electronegative. This carbon will be what? More electronegative as compared to here, जहां पर क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5 और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1. आयोडीन की सेम होती है 2.5. सो हियर कार्बन हैज लेसर डेफिशिएंसी, है ना, लेसर डेफिशिएंसी, DE
FICENCY, efficiency of electron. So lesser efficiency means what? Electronegativity is less, lesser tendency to attract electron. But here you see here, when the carbon attached to fluorine, which is more electronegative than carbon, so they will drag electron towards itself. So carbon will develop positive charge. More positive charge, more will be the electronegativity. So we see here how the substituent nature affect the electronegativity of carbon. Now let's talk about the fifth factor that affect the electronegativity. And now let's see the fifth factor that influence the what? Electronegativity, that is hybridization state of atom. For example, suppose we talk about carbon. Suppose carbon has hybridization sp, sp2, sp3 hybridization. Suppose carbon has three state of hybridization sp, sp2, sp3. अब we have to have the previous knowledge. हमको ये पता होना चाहिए बच्चों, क्या पता होना चाहिए कि s orbital are closer to nucleus than what? p orbital, है ना? s orbitals are what? More closer to nucleus than what? p orbital. Therefore, if percentage of s character increases, if the percentage of s character increases, therefore electronegativity will increase, है ना? जब s जो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, जब s का परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज. तो बच्चों यहां पर देखेंगे क्या? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर. बच्चों यहां पर देखो हमारे पास क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन में दो ऑर्बिटल्स है, दो ऑर्बिटल में से आधा कौन है? s का. तो यहां पर s करेक्टर कितना है? 50%. तीन में से क्या है? तीन में से एक s है, तो यहां पर जो करेक्टर है s का कितना है? 33%. और यहाँ पर s का करेक्टर कितना है? 25%. So because s character is decreasing, when we try to calculate the electronegativity, what you find? यहाँ पर electronegativity कार्बन कितना है? 3.25. यहाँ पे जो वैल्यू है कितना है? 2.75. और यहाँ जो वैल्यू है कितना है? 2.5. तो what you see here कि electronegativity is directly proportional to what? Hybridization. Or we can say electronegativity is directly proportional to percentage of s character. CHARACTER character in hybridized atom. More the percentage s character, more will be the electronegativity. So if it is asked कि which carbon is more electronegative, so we can say because it has maximum s character, it will have the maximum electronegativity. It has minimum s character, so it will have minimum electronegativity. Now बच्चों हमको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या है कि electronegativity does not depend on fully filled or half filled orbital. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किसमें? In the case of ionization energy, in the case of what? Electron affinity, they depend upon the value of fully filled and half filled orbital. But electronegativity, it does not depend upon the value of what? Fully filled or half filled orbital. Why? Because it is tendency to attract what? Bonded electron. It is nothing to do with what? And it is not to gain any electron from outside. It has only the relationship what? To attract bonded electron, है ना? So it is nothing to do with what? Gaining electron from outside or losing electron. So therefore it does not have, it has no connection with the fully filled or half filled orbital, or we can say stable or unstable electronic configuration. So this thing we have to keep in
mind. Now, dear student, we will talk about the most important topic of today's lecture, that is what? The application of electronegativity. So dear students, now let's see the application of electronegativity. So here there are some of the applications of electronegativity, और हम applications पढ़ेंगे. So let's see the first application of electronegativity, metallic and non-metallic nature. If we know the value of electronegativity, dear student, we can tell whether its element is metallic or non-metallic. Suppose we are having high value of electronegativity, high electronegativity value. For example, we have fluorine. Fluorine, the value is how much? 4.0. So we can say what? High electronegativity value means we have non-metallic nature. Non-metallic nature. High value 4.1. If we have low electronegativity, for example, we are having what? Cesium, francium. Cesium, suppose we say it is 0.7. So if we have lower value of electronegativity, so automatically we get the idea cesiums are what? They are what? Metallic nature. So we got the idea. Low value of electronegativity, metallic nature. High value of electronegativity, non-metallic nature. Now let's talk about the second factor. What application of electronegativity, that is what? Getting a rough idea about the bond length. तो dear student, हमको देखना है यहाँ पर क्या कि bond length जो होता है, it is inversely proportional to difference in electronegativity. Difference in what? Electronegativity. Difference in electronegativity. Suppose अगर हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास है हाइड्रोजन is to form bond with fluorine, chlorine, bromine and iodine. The electronegativity of hydrogen is 1, electronegativity of fluorine is 4.0, this is 3.0, this is 2.8 and this is 2.5. Electronegativity of iodine is similar to what? Carbon. So अगर हमको फॉर्म करना है कंपाउंड HF, HCl, HBr और HI, है ना, तो where we can find the maximum difference? Maximum difference is between hydrogen and fluorine. Maximum difference. So because of maximum difference, bond length will be what? Minimum. So HF will have the minimum bond length, and HI, because the difference in electronegativity is least 0.4. So difference in electronegativity is least, so they will have the maximum bond length. So HI will have the maximum bond length, HF will have the minimum bond length, and HI will have the maximum bond length. So this is how we get the idea about the what? Bond length. Lesser difference in electronegativity, more bond length. More difference in electronegativity, smaller bond length. Okay बच्चों, now let's talk about the third application of electronegativity, है ना? What is that? Bond strength or bond energy. तो बच्चों, अगर हमारे पास बॉन्ड छोटा है तो वो स्ट्रांग होगा, अगर बॉन्ड बड़ा है तो क्या होगा? वीक होगा. तो दिस विल बी ए व्हाट? वीकर बॉन्ड, दिस विल बी ए व्हाट? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, है ना? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. So what we can say? Bond strength or bond energy, it is inversely proportional to bond length. Or we can say what? It is directly proportional to what? It is directly proportional to difference in electronegativity. Bond length and difference in electronegativity inversely proportional. So bond strength is what? Inversely proportional to bond length. More bond length, weaker bond strength, and bond length is what? Inversely proportional to difference in electronegativity. So maximum difference in electronegativity, stronger is the bond. So bond strength is what, or bond energy, it is what? Directly proportional to difference in electronegativity. So we can say HF has the strongest bond and HI is having the weakest bond. Okay बच्चों, now let's say the next
what the application of electronegativity, that is what reactivity. तो बच्चों हम देखेंगे क्या कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी हमने क्या पढ़ा, बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ, it is directly proportional to difference in electronegativity, है ना. more bond strength lesser will be the reactivity, है ना. ये जल्दी टूटेगा नहीं, ये जल्दी टूट जाएगा. तो more bond strength lesser will be the reactivity. So we can say what we can say कि if the electronegativity difference is what more, reactivity will be less. If the electronegativity difference is less, the reactivity will be more. So here if we talk about reactivity, है ना, HF, HCl, HBr and HI. So what we find here, HI will be what, most reactive, है ना, and HF will be what, least reactive. Why? Because here we have the difference in electronegativity. Difference in electronegativity is least, therefore most reactive, and difference in electronegativity is maximum, therefore it is what, maximum, therefore it is what, least reactive. HF is what, least reactive among this hydride of, इसको बोलते हैं, these are called what, these are all what these are hydride, HYDRID, hydride of halogens, fluorine, chlorine, bromide. So these are some of the applications of what, electronegativity. Okay बच्चों. Today student, let's take two questions from JEE exam 2015. The question was asked, which of among the following is most reactive, and options were given to chlorine, bromine, iodine and what, ICl. So if dear student, if you talk about the difference in electronegativity, between chlorine electronegativity difference is 0, 0, 0, and what you see in the case of ICl, है ना, chlorine is more electronegative, so it will attract electron, it will have some negative charge, and iodine, it will have a slight positive charge, so molecule will become what, polar, and polar molecule is more reactive as compared to what, non-polar molecule. So answer should be what, ICl. Now let's take one question from JEE 1987. The electronegativity of the following element increasing order is, the options are not, I have not written the options, the carbon, nitrogen, sulfur and phosphorus, we have to arrange in the increasing order of electronegativity. तो देखो बच्चों, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 14th 15th ग्रुप में हमको मिलता है कौन, ये सारे एलिमेंट. 14th ग्रुप में मिलता है कार्बन और सिलिकॉन, और हमको मिलता है क्या, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलता है यहाँ पर. एंड वी ऑल नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज इन द पीरियड एंड डिक्रीजेज अलोंग द ग्रुप. तो अब क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, बट इससे पहले हमको बच्चों ये पता होना चाहिए क्या कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर इन group than in period. That means variation, difference in electronegativity is more in group than in period. This we have to keep in mind. So the most electronegative element will be what, nitrogen. इसमें कोई डाउट नहीं है ना. As we move down the group, electronegativity decreases. So nitrogen should be what, most electronegative. Now comes, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. Here decrease is more in group than in period. So what, carbon should have more electronegativity as compared to phosphorus, and phosphorus should be having more electronegativity than silicon. So option should be what, nitrogen should be more reactive, electronegative than carbon, than phosphorus, than silicon. So this is the correct increasing order of what, the electronegativity. Dear students, let's have the fifth application of electronegativity.
that is nature of bond. If we have the idea of electronegativity, we can have the nature of bond. Suppose A and B are having some kind of bond between them, है ना? Then we can know what type of bond is there between A and B if we know the electronegativity, and also we can calculate what percentage ionic character. If the percentage ionic character is more than 50, we say it is ionic bond. If the percentage ionic character is less than 50, then we say it is what? A covalent bond. But the question comes, how do we calculate the percentage ionic character of bond? So परसेंटेज आयनिक करेक्टर बच्चों हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से. क्या ये फॉर्मूला गिवन बाय है? क्या हैनी एंड स्मिथ. फॉर्मूला क्या है बच्चों? 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर. सो बाय दिस फॉर्मूला डियर स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज व्हाट? आयनिक करेक्टर. फॉर एग्जांपल, suppose if we have this question, हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट A and B are 4 and 1.2 respectively, है ना? परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन A and B, A dash B bond is. So let's see the percentage ionic character. So it should be what? It should be 16 into डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो 4.0 माइनस 2.1 कितना आएगा? इट विल बी कमिंग अराउंड 1.9 प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर मतलब 1.9 का स्क्वायर. सो 16 इंटू 1.9 डियर स्टूडेंट लगभग कितना आएगा वैल्यू? 30.4 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर बच्चों लगभग कितना आएगा? 3.61. अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो वी विल गेट अराउंड हाउ मच? 43% इज द परसेंटेज ionic character. So by knowing this formula we can calculate the what? The nature of bond. Ionic है ही covalent. Student, now let's talk about the next application of electronegativity, that is nature of oxide. तो oxides बच्चों बोलते हैं it can be acidic और basic, है ना? तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि basic nature of oxide अगर हम बात करें बच्चों, it is directly proportional to what? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसके बीच में बिटवीन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, और वी कैन से व्हाट? और वी कैन से एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो मोर इज द डिफरेंस, मोर इज द एसिडिक नेचर, लेसर इज द डिफरेंस, सॉरी more the difference, you know, more the difference, lesser is the acidic nature. Or we can say more is the electronic difference, more is the basic nature. So let's see, when we talk about lithium oxide, you know, beryllium oxide, then we have boron oxide, carbon dioxide, है ना? Then we have what? We have nitrogen oxide. So what you see here, the difference in electronegativity decreases, therefore what you can say? Acidic nature is increasing here. And from lithium, when we move to sodium oxide, you know, potassium oxide, here what you see here, the difference in electronegativity is increasing. Difference in electronegativity increases, therefore basic nature of oxide increases. This we have to keep in mind. Some point that we have to keep in mind, dear students, some of the non-metal oxides are neutral. For example, carbon monoxide, water, NO,
N2O. These are what? These are neutral oxide. This is neutral oxide. And some of the oxides of element like beryllium, aluminum, zinc, tin, है ना? These elements have lead. Their oxides are what? Their oxides are amphoteric. Amphoteric oxides, है ना? Including what? Sb also. Sb2O3. These are what? Amphoteric oxide. Now dear student, let's have the seventh application of electronegativity, that is calculation of bond length of heteroatomic molecule. So we can have two cases. बॉन्ड लेंथ निकालना है किसकी? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की, डिफरेंट डिफरेंट एटम, है ना? एलिमेंट ए एलिमेंट बी के बीच जो बॉन्ड लेंथ है अगर हमको निकालना है ना? तो वी कैन हैव टू केसेस, केस 2 एंड केस 1. पहले हम बात कर लेते हैं केस 1 के बारे में. इफ there are two hetero atoms, different atoms bonded together, and if they have equal electronegativity, that is if the difference in electronegativity is how much? 0. In that case the bond length will be equal to what? Radius of A plus radius, atomic radius of B. The bond length will be equal to what? Internuclear distance. That means radius of A plus radius of B. For example, suppose we want to calculate the bond length between carbon and iodine. Carbon and iodine, they have equal electronegativity. Electronegativity of carbon and iodine is how much? 2.5. So they have equal electronegativity. So if you want to calculate the bond length of carbon and iodine, it will be equal to what? Atomic radius of carbon and atomic radius of iodine. So 0.77 plus 1.36. So the bond length will be coming, sum of these. तो सम जो निकल के आया बच्चों कितना निकल गया? T2.13 Armstrong. So if the difference between the electronegativity is 0, then bond length will be equal to radius of one atom plus radius of other atom. But if the difference in electronegativity is more, then we have a law called Shoemaker and Stephenson's law. This says that the actual bond length will decrease. Actual bond length will decrease by how much? By this factor. Yeah, 0.09 into difference in electronegativity. That means bond length between A and B will be equal to what? Atomic radius of A plus atomic radius of B minus, it will be reduced by this value, 0.09 into what? Electronegativity of A minus electronegativity of B. For example, suppose we take one question. हमको पूछा है क्या कि find क्या bond length of HF, और अपन को दे के रखा है क्या कि the bond length of fluorine is how much? 1.44 Armstrong, and bond length of hydrogen is how much? It is 0.74 Armstrong. So in that case, because we have difference in electronegativity between hydrogen and fluorine, so we will use this formula to calculate the bond length. So therefore bond length between HF will be equal to what? It is, इसका रेडियस कितना होगा? इसका आधा, कितना वैल्यू आएगा इसका? 0.72 फ्लोरीन के लिए, प्लस इस वैल्यू का आधा है ना, कितना? 0.37 minus we have to do this value 0.09 minus difference in electronegativity. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4.0, और हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1. दैट मीन्स व्हाट? वी विल हैव 4 minus 2.1, कितना आएगा हमारे पास? 1.9. सो व्हेन वी सॉल्व दिस वैल्यू डियर स्टूडेंट, 1.09 से माइनस करेंगे किसको? 0.09 मल्टीप्लाई करो इसको, तो वी विल गेट हाउ मच? 0.171. माइनस करो कितना आएगा बच्चों?
0.919 Armstrongs. What do you see here? The actual bond length decreases if there is a difference in the electronegativity. For more videos, please like, subscribe and share my video.